Take 2 bowls of chana dal in a cooker and add 1 glass of water to it. Do not use too much water. Add water, cover the cooker with lid and let it cook till 2 whistles. जब तक दाल हो रहा है तब तक हम आटा ले लेते हैं, गेहूं का आटा। While the dal is cooking, take wheat flour, add salt and desi ghee to it and mix it well with water. After mixing well, add water and prepare atta. Add some more desi ghee. The dough is almost ready. Keep it covered. ये दाल ऐसा हो गया है। अब हम इसका एक छन्नी में छान लेते हैं, इसका पानी निकाल लेते हैं। The gram lentils are completely cooked. With the help of a strainer, separate the water and cook it on a pan on low flame. और देखिए इसमें मैंने ये गुड़ है, इसको डाल दिया। While cooking the dal, add chopped shaggery to it and cook it. Keep stirring until it mixes together and forms a thick paste. इसको अच्छे से चलाते रहना है जब तक ये मिक्स ना हो जाए और ये गाढ़ी ना हो जाए। 10 minutes later. इसको चलाते जाना है। It has to be cooked while stirring. Ten minutes later. Cook while stirring until it thickens. ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। Now we have to cool it. After that we will make poli. अब हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है। फिर उसके बाद हम बनाते हैं पूरन पोली। हमारी पूरन पोली ठंडी हो चुकी है और मैंने यहाँ पे तावल बिठा दिया है।
Keep the pan to heat and fill the mixture of gram dal and jaggery in the kneaded dough and roll it like a paratha. ज़्यादा बड़ा नहीं होना है। फिर हमें इसको ऐसे करके फिर हमें इसको ऐसे करना है, इसको बंद करना है, ठीक है। फिर ऐसे करना है, इस तरह से करना है। और जो बचे हुए आटे हैं उसको हम निकाल के इसको अंदर डाल देते हैं ताकि आटे में हवा न लगे। हम इसको ऐसे गोला बना के इसको थोड़ा सा दबाना है, तुरंत नहीं बेलना है, इसको हल्के से ऐसे प्रेस करना है ताकि ये चारों तरफ घुस जाए। और हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से इसको बनाना है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छे से अंदर तक सब जगह चारों तरफ इसका चला गया, मसाला चला गया। मैंने एक ऑलरेडी चढ़ा रखा है, इसको ऐसे ही रख देना। तब तक मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। ये देखिए ये ऐसे हल्के हाथों से After rolling the paratha, cook it on the pan from both the sides by applying desi ghee or oil on both the sides. बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन जाता है पूरन पोली। ये देखिए कितना टेस्ट अच्छा लग रहा है, टेस्टी। अब हम इसमें घी लगाएंगे। ये अच्छे से घी लगा दिया, इसे पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है। देखिए कितना टेस्टी बन गया है। अब हम दूसरा वाला भी ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा वाला भी कैसे फूल गया। See, both our puran polis are cooked well and ready to eat. देखिए कितना टेस्टी पूरन पोली बन गया है। Puran poli is ready to eat. See, it has spread well all around. You can also make it in your homes and enjoy it. ये देखिए किस तरह अंदर पूरा, देखिए ये पूरा अंदर अच्छे से भर चुका है। देखिए तो आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए पूरन पोली। थैंक यू।